जो ISI का जो TCO निकला है उसके बारे में आप आपके ज्वेलर भाइयों के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? तिजोरियां तो सभी बिकती मार्केट में, लेकिन चूंकि भारत सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं और जो भी जून से लागू हुए हैं, तो उसमें मैं जरूर अपने सभी ज्वेलर भाइयों से कहना चाहूंगा कि BIS की तरफ से जो मानक तय किए गए उन मानक के अंतर्गत जैसे 300 किलो से ऊपर की जो तिजोरियां हैं उनमें ISI BIS की स्वीकृति जरूरी है। तो आप उसी को ध्यान करके और गोदरेज ने जो आज लॉन्च किया ये BIS के मानकों को ध्यान में रख के किया है और मानक के अनुरूप। Just to tell you about the safe, it's very wonderful, very nice, and very sturdy. The latest model, and the best part is it is approved by the BIS, Bureau of Indian Standard, Government of India. So now we are rest assured that all the qualities, all the ingredients, and all the facilities what is given by Godrej is the best used in it. So there is no doubt, undoubtedly we can say that this is the best safe available in India at the moment, which is used in multiple countries in the world also. And when people trust our products in all over the world, we are proud to say that as an Indian product, this is one of the best safe available in our country. इस महिना नवीन सुरू केलं आहे की आपण हॉलमार्किंग दागिन्यांच्यात जसं हॉलमार्किंग आलंय आता सेफमध्ये पहिल्यांदा आमचे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आत्ता सगळ्या लोकांना आमच्या ज्वेलरी लोकांना माहीत झालं की जर तुम्हाला इन्शुरन्स जर हवा असेल तर ISI मार्किंग आणि BIS चा लोगो असेल किंवा BIS अप्रूव्हल असेल तरच तुम्हाला ती इन्शुरन्स मिळू शकते. चांगल्या रीतीने घेतले जाते आणि तिने जे आता जे प्रोडक्ट बनवलेलं आहे ते अतिशय सुंदर आहे. आमच्या ज्वेलरी व्यवसायाच्या दृष्टीनं ते अतिशय सिक्युअर आहे. सर्व ज्वेलरांना मी विनंती करीन की जास्तीत जास्त गोदरेजकडे तुम्ही कल असावा आणि त्यांच्याशी बोलून आपल्याला पाहिजे तसं बनवून तुम्ही घेऊ शकता.